तो कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ कैनेडा फाउंडेशन के वलों की गई। तो इस बार जो विषय सीगा कॉन्फ्रेंस का वो सीगा यूनाइटेड अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। इस विषय के उपर एक कॉन्फ्रेंस जी है वह करवाई गई जिसका मकसद समाज में पै रही अतवादी सोच के खिलाफ इकट्ठे होना है। ये समागम सवेरे 10 बजे तो शाम तक चलाया गया। कॉन्फ्रेंस दौरान विशेष माहरां समाजिक नेतावां अते कम्यूनिटी दे वल्लों विशेष तौर पर विचार वटांदरे साझे किए गए। तो ये तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। तो कैनेडा इंडिया फाउंडेशन के वलों सारे जिन्ने भी मैंबर पहुंचे सी तां जिन्ने भी लोगों ने शमूलियत की गई उन्हां दा खास तौर पर धन्नवाद इस मौके किया गया। तो इस मौके फाउंडेशन के मैंबरस दे नाल भी साडी गलबात हुई तो उन्होंने दस्सिया कि आखिर किस तरह कैनेडा इंडिया फाउंडेशन जी है वो काम कर रही है, किस मुद्दों को लैके जोड़े समाज के विचरण वाले मुद्दे होंगे ने तो उसनों लैके किस तरह ये फाउंडेशन काम कर रही है। आओ तुहानूं लै चलदे सीधा तो गलबात जी है उन्होंने मैंबरों के नाल करवाने कि आखिर किस तरह ये फाउंडेशन काम कर रही है। And there's a lot of issues affecting Canadian national security today, whether it's foreign interference, whether it's extremism and radicalization. We have a massive crime epidemic in this country. Foreign dictatorships use our land to snow wash money in our capital markets and our real estate markets. So we have big problems in this country, and we need to be cooperating with countries around the world toward confronting these shared threats. As you know, many of them are not just limited within one border. They migrate across borders, and they require people of common values to be able to confront them together. And I think this is a good step today to work across borders, not just through Canada and India, which the Canada India Foundation represents, but also Tafsik and our Jewish friends and our Israeli friends. Around the world, innocent people are being subjected to horrific levels of crime, and it's important that they work together to confront these shared threats and keep their families safe. Namaskar, thank you for having me. I belong to a civilization that has been subjected to extremism for over 1,000 years. The most recent one was as recent as April 22nd. The entire world witnessed a dastardly attack on tourists, innocent tourists that lost lives in Kashmir. There has been a dispute over Kashmir for numerous years, and that is the one incident that I wanted to highlight at this very important conference. It is the need of the hour in Canada. Canada is a beautiful country which has given great life and livelihood for people all across the world. There is a sizable Indo-Canadian population here, but there are a lot of people from all around the world. We have Italians, we have Dutch, we have French, we have Iranians, we have Chinese, we have a lot of people from the Middle East. Canada is like a mini world in itself. There are people from all over the world, but the people from various parts of the world have carried their problems into Canada too. कैनेडा इंडिया फाउंडेशन एक 15 साल से अलग अलग विषयों पे कार्य कर रहा है कनाडा में रह के, और महदअंश जो भारत और कनाडा के बीच में जो काम होता है उसके क्षेत्र में काम है। कनाडा एक बहुत बड़ा देश है और बहुत जो कुदरत की जो बहुत से मतलब कि संसाधनों से भरा एक कंट्री है। ये देश में जो विश्व में जो हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। लोग आते हैं, ईसाई होते हैं, लेकिन सांप्रदायिक समस्याओं से ये भी देश जूझ रहा है। तो इसी स्थिति में सब अवगत कराने के लिए सामान्य जनता को और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये पहला कदम उठाया है। और ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत अभी एक मायना जो है मायना करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट वी हैव रेज्ड रिसेंटली। आई थिंक इट हैज बीन हैविंग अ ग्रेट रिसेप्शन फ्रॉम ऑल ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये जो है ये कैनेडियंस के लिए ही हमने ये फोरम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कनाडा में अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी बहुत लैक्स हो गई है और कुछ एक्सट्रीमिज्म और रेडिकल एलिमेंट कैनेडियन लोगों को परेशान कर रहे हैं।
हम इससे कैसे उभरे, इसके लिए ये काम डिस्कशन हो रही है। और इसे बचने के लिए हमें कैनेडियंस लोगों में ध्यान देनी चाहिए कि ऐसे रेडिकल लोगों को ना हम यहाँ पे प्रोत्साहित करें। Well, I was invited out from British Columbia. I came out. I'm a YouTuber. Channel name is Clyde Do Something. I talk about news and politics in Canada. I've been talking about a lot of the unfettered immigration that's been happening in Canada and some of the issues surrounding that. A lot of Canadians don't know what's happening in the Indian diaspora. That there's actually many different cultures and there's a conflict that's happening because of some really bad immigration policies. I was invited out here to speak at this event today. I'm really excited to see that so many different communities around Canada are getting together to discuss this topic. This is something that our political class is trying to largely ignore, and it would be pertinent if they started paying attention. The best way to do that is to bring more and more people together to talk about these topics. So we put this together with the Canada-India Foundation, Tafseek and them, because we're losing our country. Because Canada's losing the country. There's incessant hatred in this country. It's growing like a cancerous tumor. We're seeing extremist ideologies from the very far left, the Islamists, jihadists, the Marxists, the communists. We're seeing constant hatred towards the Hindu community by the Khalistani extremists. Sowing division between the Sikh community and the Hindu community. And if we don't do something about this, we're going to lose this country. I think everybody here has the same understanding of the importance of keeping this country free and democratic. And the people who are causing all this division and hate and violence and just intolerance are trying to ultimately not just harm all of these communities, the Jewish community, the Christian community, the Hindu community, it's to destroy democracy. This is the big picture. So if you support the destruction of democracy, then you should go and stand with those extremist groups. If you would like to preserve Canada and our culture and the democracy that we have in this country and the freedoms such as freedom of expression, freedom of religion, then you should oppose these extremists. The problem is most people in Canada don't know what's really happening. They don't want to think about it. They're tired. They're working their asses off. And all they want to do is come home and relax. But the reality is if we don't do something now, this country will be lost forever. Honestly, it was a very great event today, very great conference, and we touched the issues on Canadian soil that I don't say nobody, but many people, they don't touch that. So we see these days the jihadists, we see in the previous parliament, 11 members of parliament, they were influenced by Chinese Communist Party. We know that Muslim Brotherhood, Qatari government, they are seeking for a political influence on Canadian soil. So we need to address this issue. We need to bring back the safety and happiness to the Toronto's street, to Montreal, Vancouver, the other major cities. Unfortunately, many politicians, they don't care, and some of them, they don't dare to talk about this issue. But today was a great conference. Thank you to р-чрч, thank you to Amir Epstein, the other friends. So they brought different people from different background, Iranian community, Venezuelan community, the Indian community, Jewish communities. We were here and we addressed the extremism, and as you see that in the panels and in the venue, we were united about extremism. एयर इंडिया 182 पे मेरी पूरी फैमिली थी, डैड, मॉम एंड बेबी सिस्टर, एंड माय डैड वाज द इन-फ्लाइट सुपरवाइजर ऑफ द फ्लाइट. ही वाज ऑन क्रू मेंबर इन चार्ज ऑफ द कैबिन क्रू, एंड हकीकत में मैं उस फ्लाइट पे मैं भी होने वाला था, बट उनके जाने के 2 दिन पहले मेरे एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए, 12वीं रिजल्ट, और मैं फेल हो गया. मुझे आई स्टेड बिहाइंड to do my revaluation of exams, and after that, 11th March, I heard about the tragedy and I was there. I lost my whole family.
ये जो मौका मिला मुझे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ सेमिनार रख लिया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, बढ़िया था। एंड मैं एक्चुअली आयरलैंड में था, बिकॉज पिछले हफ्ते 40वां एनिवर्सरी था। हरदीप पुरी साहब आए थे, बहुत सारे MLAs और MPs आए थे इंडिया से, और वहाँ हमारे प्रेयर्स हुए थे 40वां एनिवर्सरी पे। और मुझे इनका बुलावा आया तो मैं डबलिन होके डायरेक्टली आ गया था, बिकॉज आई थिंक आई फील वेरी इम्पोर्टेंट कि इस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है और ये स्टोरी सब तक पहुंचाना चाहिए। मैंने एक बुक भी लिखा है, बट बुक के ज़रिए कुछ लोग वाकिफ हो गए, बट बाय एंड लार्ज कैनेडियन पब्लिक टोटली अननोन है। तो इसलिए मैं आया हूँ और मेरा ये मकसद है कि मैं सिटी टू सिटी जाऊँगा एंड बातचीत करूँगा, सेमिनार दूँगा, आई ट्राई टीचिंग स्टूडेंट्स। मेरी ये ख्वाहिश है कि एक मेमोरियल बने कनाडा में और इंडिया में, और मेमोरियल सेंटर बने